सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार मैं इसके ऊपर बात करना चाहती थी, मगर मुझे मौका नहीं मिला। और वक्त ऐसा हो गया है और ऐसा आ गया है कि कोई ऐसी घटना घट गई इस शहर में, इस देश में, जिसकी वजह से मुझे ये स्टैंड लेना पड़ा। मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है कि मैं खड़े होकर प्रोटेस्ट करूं या पार्लियामेंट के किसी रूल को ब्रेक करूं, मगर सर मैं मजबूर हूं, मुझे इस तरह का स्टैंड लेना पड़ा। सबने बताया कल हिंदुस्तान की राजधानी में क्या हुआ। सर दुख की बात तो यह है कि एक महिला जर्नलिस्ट जो इस वारदात को कवर करने के लिए गई थी, उनको मैन हैंडल किया गया। इट्स अ शेम सर। अरे इसलिए ऑर्डर बोलिए 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 बोलिए, क्यों करते? आई एम लिसनिंग टू ऑल्सो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूं, क्या क्या ना बोलूं। थोड़ी हिल गई हूं, क्योंकि अब तक मैं सोचती थी कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां महिलाओं को प्रतिमा माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। दुर्गा को हम लोग पूजते हैं, कहते हैं कि ये शक्ति की प्रतिमा है। सारे हमारे इन विचारों पर पानी फिर गया, क्योंकि हर रोज हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में और खास तौर से हिंदुस्तान की राजधानी में इस तरह के वारदात होते हैं जहां शक्ति जो है कुछ कर नहीं पाती। सो आई फील कि ये जो दिखावा है, इस आडंबर को हमको बंद कर देना चाहिए। The way we are discussing this topic today, it should have been done earlier. Sir, look at the kind of reports that we get on this house. ये मेरे पास रिपोर्ट है, आंकड़े दिए गए हैं, आपके मंत्री ने दिया है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के, उसमें आंकड़े हैं, आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। और सर ये जो आंकड़े उनके पास आते हैं, वो ओनली केसेस विच आर रजिस्टर्ड विद द विमेन सेल। सर टाइम को मत देखिए प्लीज। सर प्लीज डोंट, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। आई डू नॉट वांट टू मेक an issue out of it. Please allow me to speak. There are more people. Yeah, let it speak. I'm not doing politics. Yes. सर यहाँ आंकड़े दिए गए हैं दिल्ली में। No. Jayaji, please conclude. I have to allow more people. That's the point. Sir, मैं नहीं बोलूंगी. I will protest outside the house. No, I will not speak. This is not fair, sir. Whenever we come to a discussion about women, for last 3 days I've been asking, I'm not being allowed in various forms. I'm sorry, sir. This is a very important subject. I advise you, you How give a is it separate notice that we take up other political subjects? Rajya Sabha is not meant for this. Rajya Sabha is meant for issues like this. We have to discuss it. Yeah, this is the problem. What I am trying. And because of her attitude in the house, the women are being treated in such disrespectful manner in this country. I'm sorry, I protest. I will keep standing. I will not Your speak. remarks will not go on record. Sir, I'm sorry. See, I am trying to accommodate maximum people. If I allow Please do not accommodate women. You give a notice. We can have a separate discussion. आप notice दीजिए. You give a notice. अरे सर, हर कोई प्लीज नोटिस देख के बलात्कार को भी करना चाहिए। शिवानंद तिवारी, श्री शिवानंद तिवारी, नहीं मैं नहीं बैठूंगी, आप बोलिए। आप बोलिए। What can I do? सभापति महोदय, उपसभापति महोदय। Sir, you can do a lot. It is easy to blame chair. Do a lot. I'm not blaming anyone. And I'm not blaming anyone, want me to control. What do I do? No, I'm not blaming anyone. You should give freedom for people to speak. No, it is not going on record. I told you. Now I called Shivanand Tiwari. Jayaji, you are my sister. You give a separate notice. You will get enough time. You will get enough time. Sisters are not safe in this country. Now you will get enough time, but not now.
Sir, for a question like this, for a subject like this, there is no time. Do not bind us. Is it my fault? How can you blame No, the sir, chair? I'm not blaming you. Now, Shivansh I'm not Tiwari, blaming you. कैसे बोले सर? you don't want to speak? Where is their protection? Do you not think that we should think about it very seriously? I'm ashamed. I personally feel very, very ashamed that I'm sitting in this house and I'm helpless and I'm not being able to do anything. And I'm certainly very, very disturbed, and I'm equally disturbed by the answers that keep coming and being placed on this august house by the ministers concerned, which are totally incorrect. I do not know what else to say. I thank you very much, and I think that there should be a law. Okay. Okay. Yeah. Yes. 1 second, sir. 1 second. I finished. I'm not going to say anything more. We understand your problem, sir. Time is... Sorry? No. No, his time is problem. Okay. Sir, I think this act of sexual assault should be treated at par with attempt to murder, and section 307 of IPS should be amended to include rape under its purview. Okay. And I think, sir, we need to, this is a very good opportunity for us. It's sad that I'm calling it an opportunity. Srimati This is a Prabha very good time for us to make it an example and show to the country that you mean business. Thank you very much. Srimati Prabha Thakur.